बोले दुर्गा मैया की जय, आर्य शक्ति माता की जय। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों के लिए कम समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे सुन सकें, इसके लिए मैं प्रयास किया हूँ आप लोग के लाभ के लिए। आप लोग सुने। ओम ज्ञानेनाम चेतांश देवी भगवते सा बलादकृष्ण मोहाय महामाया प्रकृति दुर्गे स्मृता हृतभीतम से जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी काद दुनिया सर्वोपकार करना सचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहंज तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमासितानां द्विपन्द्राणां त्वमासितां हास्तां प्रयान्ति सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने यस प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति सती साध्वी भो प्रीता भवानी भो मोचनी आर्या दुर्गा जया चाधातनेता शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताजिति सर्वमंत्र में सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्या भव्या सदागति सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेकवर्णा च पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना कलमंजरी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंगमणि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णविता चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च पुरुषागति विमलोत्कर्षणी ज्ञानाख्या नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहनानि सुमन्नि महिषासुर मर्दिनी मधुकैट भंति च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती अप्रौढ़ा च बद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जरोदरी शिवदूती कराली चनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयदम प्रपठे नित्यं दुर्गानां सताचकं नासाध्यं विदिते देवी सोलोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिर्मेव च चतुर्वर्गे तथा चान्तेर्वेन्मुक्ति च शाश्वतीं कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत पर्याप्तं भक्त्या पठेनां सताचकं तत्सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्ये श्रियं वाप्नुयात् गौरोचनालुक्त कुङ्कुमेन सिन्दूर कर्पूर मधुत्रेण विलक्ष्य यन्त्रं विधना विधज्ञो भवेत् सदा धारते पुरारी भौमवस्यानि सामग्रे चंदे सद्विसांगते विलेख्य प्रवठे सोतं स भवेत् संपदां पदम् ओम श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवतांगन्या सूक्त मातुर्बीजम दिग्बंध देवता तत्वं जगदम्बा प्रीत्यर्थ सरस्वती पाठे जमेरी योगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेयवाच ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षा करंग राम जनकसिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास कवचं पुण्यं तस्मसु महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नो दुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निना दह्यमानस शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मय दुर्गमे चोभयार्ताः संगता न तेषां जायते किंचित् सुमुहूर्तं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां प्रदीप जायते ये त्वामि समर्थ देवेश रक्षसे तान् संशय प्रिय संस्था तु चामुंडा वाराहि में शासना ऐन्द्रिक समारूढ़ा वैष्णवी गुणासना माहेश्वरी प्रसारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी प्रस्वाहना ब्राह्म्यंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगाः समन्विताः नानाभरण सौभड्या नाना रत्नोपशोभिताः दशसंतीर्थमारूढ़ा देव्यः कुल समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्ति हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं च परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशानां भक्तानां भयाय च धारयन्ताय युधा नित्यं देवानां चिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रुं भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयमग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणि रक्षेद्वाभ्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐसन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेत हस्ताद् वैष्णविदिता एवं तस्य सौरक्षे चामुण्डा सौवाहना जया मे चागतः पातु विजया पातु प्रसुत अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च परायिता शिखामुद्धोतु निरक्षेत मां मूर्धन्य व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत शशुनि त्रिनेत्रा च भ्रुर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनि चक्षुषोर्मध्ये स्रोतद्वार वासनि कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती
दंतान रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकांक्षत घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिपकं रक्षत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा भैकंठे नलिकांग नलकूबरे स्कंदयो खड़ग्नि रक्षेत बाहुं वज्र धारणी हस्तर्यो दंडनि रक्षेत अंबिका चांगुली सुचनखाक्षुरेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनु रक्षेत महादेवी मनाशोक विनाशने हृदय ललिता देवी उदय सुलधारणी नाभच काम निरक्षेत गुह्यं गुह्य सुरता पूतना कामिका मेढं गुदय महेश्वानी कट्यां भगवती रक्षे जानूनि बिंदवासिनी जंघे महाबला रक्षे स्वर्कांपतानि गुल्फी और नारसिंहि पाद प्रश्रित तेजसी पादांगुलेषु श्रीरक्षेत पादाधसलवासनि नखान्दष्टा कराले च केशांचे वर्धु केसनि रोमकूपेषु कोबेरी त्वचंगवागे स्वरि तथा रक्तमज्जावसामान सानस्ति मेदांसि पार्वती यंत्राणि काल रात्रि च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणि तथा ज्वालामुखिनक ज्वालां भेद्दां सरसिनिषु शुक्रं ब्रह्माणि में रक्षे छायां छत्रे स्वरि तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षण में धर्म धारणी प्राणापानों तथा व्यानुदानम च समानगम वज्रहस्ताच में रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वं रजसमश्च रक्षेत नारायण सदा आयुरक्षत वाराहि धर्म रक्षत वैष्णवी यसा कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशुन में रक्षनिके पुत्रान् रक्षेत महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी पंथानां शुभता रक्षेन मार्ग क्षेम कहि तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं त्वदिस्थान वजतं कौचयन्तु तत्सरक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी पद्मे कनक अक्षेत विदीक्षेषु मास्मन कौचनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्राथ लाभश्च विजय साविकामिकः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निशितम् परमेश्वर मतलं प्राप्ते भूतलेपवान् निर्भयो जायते मृत्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमानितं तु देव्यः कवचं देवानापि दुर्लभम् यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सध्यान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं च प्रतिमं चापि यद्विषमं विचाराणि सर्वाणि मन्त्रन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्च जलजाशोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षसाः ब्रह्मराक्षस वेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संसते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजोवृत्ति करम्परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सरस्वतीं चण्डी गत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सहशैलवन् काननं तावते सन्ति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रके देहान्ते परमं स्थानं यस्वैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री अर्गलाय स्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलाय स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते सप्तति पाठं तुम जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेयवाच जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणे जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रा विविधातवर्दे नमः रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि महिषासुर नैनासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि रक्त बीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्रासस्य मर्दिनी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि वंदितांग देवी सर्वसौभाग्यदानी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि अचिंत रूप चैते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि चंडिके सत्यं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि विधेहि दुष्टां नाशं विधेहि बलमुच्चकै रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि विधेहि देवी कल्याण विधेहि परमांश रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि सुरासुर शिररत्न रेखष्टचरंबिके रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जनम कुरु रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चंडिके तपताय रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्थे परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि कृष्णेन संस्थे देवी सस्वत भक्त सदाम्बिके रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि हिमाचल सुतानाथ संस्थे परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि यशोधैर्य सोजहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि देवी भक्त अंजनोद्दाम दत्तानंदोदय अंबिके रूपम देहि जयं देहि सौधैर्य सोजहि पत्नी मनोर वाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य क्रोधभवाम इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर सतु सदसती संख्या वर्माप्नोति संपदाम्। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। अथ कीलक मंत्रस्य अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सरस्वती पाठं त्वं जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेयवाच
ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे सर्वमे तद्विजानीय मंत्रणा विकीर्गम सोपि सेवं वाप्नोति सततं जाप तत्पर सिद्ध्यत्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि तेन स्तुतां देवी स्तोत्रमात्यं सिद्धते न मंत्रो नोस्तं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्यं सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकसंख्याय मामरः कृत्वा निमन्त्र्यामा सर्वमेव इदं शुभम् स्तोत्रं विचनिकायास्तु तच्चगुप्तं चकारस समाप्तिं च पुण्यस्य तां यथा वन्त्यन्तना सोऽपि च वाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां व चतुर्दश्यामष्टाम्यां व समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानथे स प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधाय नाम नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः सगुणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यर्थस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युः संयाति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धं कुर्वीत न कुर्वाणो विनशति ततो ज्ञातव्य सम्पन्नमिदं प्रारभते बुधैः सौभाग्यादि च किञ्चित् किञ्चित् स्थलं नाजेन तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जपमिदं शुभम् शनैश्च जपमाने अस्मिन् स्तोत्रे समद्रुचिकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेतत् ऐश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यारोग संपदा शत्रुहानि पूर्वमोक्षः स्तुते सान किञ्जनै ओम श्री भगवते दुर्गा देव्यै नमः। अत वेदोक्तरात्रि सूक्तम् ओम रात्रि व्याख्यादायते पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वाधि श्रियो अधित ओरप्पा अमात्तो निवतो देव्युदितः ज्योतिषा बाधते तमः निरुश्वसारमस्कृतोषसं देव्यायति अपेदुभासते तमः सान्वद्ध अस्या वयं नीते यावन्वीक्षमहि वक्षेन वस्तिं वयः निग्रामो स वीक्षत निपध्वन्तो निपक्षिणानि सेना सस्यदर्थिन या व्याप्रकं यवैस्तेन मूर्धमथाना सुत्राभव उपमापि सत्तम कृष्णं व्यक्तमसितौ शरेण याते उपतेगा इवाक्रम वृष्णि वधुहि तरदिवः रात्रिस्तु न जिज्ञुषे ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्रिं संहार कारणिं निद्रां भगवतीं विष्णु त्वान्ते स प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि षट्कार स्वात्मिका सुधात्मक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मका स्थितार्धमात्रा स्थिता नित्यानुचारे विशेषतः तमे संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वद्वायते विश्वं त्वय सजिते जगत् त्वत्पालते देवी त्वमसन्ते च सर्वदा विशिष्टो षष्ठरूपा त्वं विशिष्टरूपा च पालने तथा संगतरूपान्ते जगतो स जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महाशक्ति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणतर विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्रेष्ठमीश्वरी त्वं हिस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनि शूलिनि घोरागति चक्रिनि तथा शंखनि चापणि बाणशुण्डि परिधाविता सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्य सुंदरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सद्वा क्रियात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तुष्ये तदा या त्वया जगत्सृष्ट जगत्यापति यो जगत् सोपनिद्राव संमितः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कृता ते त्वां कः स्तोतुं शक्तिमानं भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संसुता मोहयेतो दुराधर्षा वस्रो मधुकैटव प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामुचितो लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तु मे तो महासुरो ओम श्री देव्यार्थवशेषम् ओम सर्वे वै देवा देवी मूपतस्तु कासितुं महादेवेति सा ब्रवीत अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषार्थकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानन्दो अहं विज्ञाने विज्ञाने अहं ब्रह्म ब्रह्माणि वेदितव्यम् अहं पंचभूतानि पंचभूतानि अहमिखं जगत् वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याम् अजाहम् अनजाहम् अधः चोर च तिर्यक्षहम् अहं रुद्रेभिर्वशुभिश्चरामि अहमादित्य विश्वदेवैः अहं मित्रवरुणाभर्मि अहमिन्द्राणि अहमिश्वनावुभो अहं सोमं तुष्टानं पोषणं भगं ददामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्राह्मणमुत प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं भविष्यते सुप्रावे यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे संगमनेव सुनाम चिकितुषे प्रथमा यज्ञानम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरपस्वन्तः समुद्रेय एवं वेद सदेवीं सम्पदामाप्नोति ते देवा पूर्वं नो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः नमः प्रकृतै भद्राय नेताः प्रणताय स्मृताम् तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्ति वै रोचने कर्णफले जुष्टां दुर्गा देवी शरणं प्रपद्धामहे असुरानाशित्ते तेन नमः देवी वाचं जनयन्त देवस्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानमन्दिरे समूर्जतवानां धेनुर्वर्गाश्वस्मान् सुष्टयतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवी स्कन्दमातरं सरस्वतीमुदितीं दक्षदुहितनं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदिते जनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रामृत बान्धव कामयोनि कमला वज्रपाणिर्गुहासा मातरि स्वाभिमिन्द्र पुनर्गुहा सकला माया च पुरुचे स विश्वमाता दिवोद्धम ऐसात्मशक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाधराय सपस्मद्या एवं वेद सुखं तरति नमस्तेस्तु भगवती मातस्वान् पाहि सर्वतः सहसाष्टो वसुव सहसाताद साधु सहसाद्वाद सादित्याः
सहसा विश्वे देवा सोमोपास सहसा मया तु दान स्वरक्षांसि पिशाचा रक्षा सिद्धा सहसा सत्वजस्तमान सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्रूपिणी सहसा प्रजापति वनव सहसा नक्षत्र ज्योतिषि कलाकाष्ठादि काल रूपिणी ताम हम प्रोम नित्यम पापहारिणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी नंता विजयाम सिद्धिं शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वेदिकार संयुक्तं वेद्योत समन्वितं वर्धेन्द्रस्तम दिव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एमेकाक्षं ब्रह्म प्रत्यय शुद्ध चेतस ध्यान्ति परमानंदमया ज्ञानं ब्रास्य वांगमया ब्रह्मसु तस्मात् षष्ठं वक्त समन्वितां सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्तष्टादुतीकः नारायण सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्छेदवान् कोणे सानंदायकः पुंडरीक मध्यस्थं प्रातः सूर्य समप्रभां पाशाकुशधरां सौम्या वरदाभय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां धाम्भजे नमामि तं महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रसन्नी महाकारुण्य रूपिणी यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादेव न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जनं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजाय कैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका अतएव उच्यते अज्ञेया नंता लक्ष्या जय का नैकेति मंत्राणां मातृकादेव शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता सुनैनां सुनसाक्षिणी यस्या परत्र नास्ति सहसा दुर्गा प्रकृता तां दुर्गा दुर्गमादेवी दुराचार विघातनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारनवतारिणीम् इदमथर्वशीर्ष योधिते सा पंचाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षं ज्ञात्वा यो अर्चा स्थापयति शतलक्षं प्रजात्वापि सो अर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास पुनश्चर्य विधि स्मृतः 10 वारं पठेते शुद्धः पापे पहुँचते महादुर्वान् तरति महादेव्या प्रसादतः सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशति प्रातः ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशति सायं प्रातः पुंजानो पापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवतानां सन्निध्यं भवति प्राण प्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमा विश्वन्यां महादेवी सन्निध्यं जपत्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति एवं वेदित्युपनिषद ओम श्री भक्ति दुर्गा दिव्यै नमः ओम श्री आदिशक्ति मातेभ्यो नमः जगज्जननीभ्यो नमः ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः वत् श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय ओम प्रथम चैतस्य ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तचंद्रिका बीजम अग्नितत्व ऋग्वेद स्वरूप महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोग ओम खड़गं चक्र गदेषु चापरेखाक्षूलं सुंडी शंखं संदतिं कैस्नेनां सर्वांगभूषावदां नीलासंधुतिमास्पदिकां सेव्य महाकालिकां यामस्तोपते हरो कमलजो हन्तु मदकैटवम् ओम नमः चंडिकाय ऐं मार्कण्डेय सावर्णेशोत्तन्यो यो मनु कथ्यतेष्टमनि सावयमय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गत्तो मम महामायानुभावे निथावन्त्रादिप सबहु महाभाग सावर्णस्तन्योर्वे सोरोचस्यन्तरे पूर्वे चैत्रवै समुद्भव सूर्थो नाम राजा भू समस्त मंडले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्राणि वोर्षान् बभूवुः शत्रो भूपा कोला विध्वंस सदा तस्य तैर्भवति युद्धमति प्रोदन्निन्यूनरपि तैर्युद्धे कोला विध्वंस विजितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागैः तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बले दुर्व्रस दुरात्मभिः कोशोबलं चाप्रदं तत्रापि स्वपुरेतः ततोऽम्नज्ञा व्याजनेतः स्वामे स भूपति एकाकी हैमारुः जगामगः नम्बनं सतत्राश्रमद्राक्षीरतिजवर्षस्य मेधसः प्रशान्तस्सावधाकिरमुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित् कालं च मृणां तेन सत्कृतः हितश्चेतस्य विचरस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्त्वमत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वमया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्तैस्तैः सद्वृत्तैः धर्मतः पालितेन वा न जाने स प्रधानो मे सूरहस्ति सदामदः मम वैरिव संयातः कानभोगानुप्लसते एव मानवता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्वेद्य कुर्वन्ते महीवताम् असम्यग् वैश्रीरस्ते कुर्वद्दि सत्तं वयम् संजितः सोऽति दुःखेन क्षयङ्कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्रा समाभ्यास्य वैषमेकं दतः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमित्रक सशोक इव कस्मास्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचः तस्य भूपतेः प्रणोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतोनपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे न्यस्य धनुर्लभाद साधुभिः विहीनस्य धनदारे पुत्रादाय मे धनम् वनाभ्यागतो दुखी निश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्धि पुत्राणां कुशलाकुशलाद्विकां प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां ताच्चात्त संस्थितिः किन्नु तेषां गृहे क्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किं सद्वताः दुरुता किन्नु मे सुताः राजोवाच योनिरस्तो वालुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेज किं भवतः स्नेहमनुभग्नाति मानसं वैश्यवाच
एमेतद्धा प्राह भवान् स्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यही संत्यज प्रत्यस्यं धनुरुद्धे निराकृतः पतिसोजनहार्च हार्दितेस्य मे मनः किमे तन्नाभि जानामि जाननपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगणेषु बन्धुषु तेषां कृतेव निःश्वासो दोर्नसं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रेतेषु निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मनुसमुपस्थितो समाधिनां वैश्यो असु स च पार्थिव सत्तम कत्वातुतो यथान्यायं यथाहतेन संविदम् उपवेष्टो कथां काश्चिचक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदसु तत् दुःखायन मे मनसः स्वचेताय तथा विना मम त्वं गत राज्यस्य राज्याङ्गेषु क्लेशोऽपि जानतोऽपि विथाज्ञस्य किमे तन्मे सत्तमम् अयं च निगतः पुत्रदारेभ्यस्तथोजितः स्वजनेन च सक्तेषु हार्दितथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्यन्तदुःखितो दशदोषेऽपि विषये मत्वा कृष्टमानसो तत्कृतेन महाभाग्येन मोहो ज्ञानिनोरपि मोहस्य च भवेत् ऐसा विवेकानन्दसमूर्तारि श्रीवाच ज्ञानमस्ति समन्तस्य जंतो विषय गोचरे विशेष्य महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दिवान्धा प्राणिन केचिद्रात्रा बन्धा स्थापरे केचिदिवा धारातो प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु नहि ते नहि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यथोभयो ज्ञान्यपि सते पश्यतान् पतंगाक्षा वांक्षसु कलमोक्षादता मोहा पीड्यमाना पेशुधा मानुषा मनोजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकारा नन्वितान् किं पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहं गर्ते निपादिताः महामाया प्रभावेन संसार स्थिति कारिण तन्नाथ विस्मयकारी योग निद्रा जगत्पते महामाया हर चैसा त्या सम्मोहित जगत ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भक्त ईसा बलादकस्य मोहाय महामाया प्रक्षति त्या विषते विश्वं जगते चराचरम् सहसा प्रसन्ना वरदानराम भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतु च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजवाज भगवान का सा देवी महामायतयां भवान ब्रवीत गतमंत्पना सा कर्म्याच किंदुज यत्प्रभाव च सा देवी यत्स्वरूपाय उद्भवा तत्सरस्वतमीक्षामि तत्त्वब्रह्म विदाम्बरे श्रीवाच नित्यव स जगतमूर्तिस्त्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा सुतामम देवानां कार सिद्ध्यर्थ महावीर्भवति सायदा उत्पन्नेते दालोके सानित्या विधीते योग निद्रां यदा विष्णु जगत्ते काण विगते आस्तिशेष भजकल्पान्ते भगवान प्रभु तदा दा सुरघुरो विख्यातो मधुकैटवो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्राह्मण मुद्दतो सनाविकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दष्ट्वावताव सोचो गुरुप्रसूतं च जनार्दनम् दष्ट्वा योग निद्रां तामेकाग्रह दशते विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्र कतालयां विश्वेश्वर जगद्धाते स्थित संहार कारिणी निद्रां भक्ति विष्णु तुलान्ते स प्रभु ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि षट्कारः सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तिथा मात्रात्मिका स्थिता अर्थमात्रा स्थिता नित्यानुचारे विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वद्वायते विश्वं त्वय सहिते जगत् त्वयत्पायते देवी त्वं सन्ते च सर्वदा विशिष्टो षष्टिरूपा त्वं विशुद्धरूपा च पालने तथा संगतरूपान्ते जगतस्य गन्धे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहच भवति महादेवी महाश्री प्रकृतस्थं सर्वस्य गुणतय भावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा त्वं श्रेष्ठमे श्रेष्ठम हिष्टम बुद्धबोध रक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टम शांति शांतिरेव च खड़ग्नि शूलनि घोरागात्नि चक्नि तथा संघ्नि चापनि बाणपुसुण्डी परिधाय विधा सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस सुंदरी परा प्राणम परमात्मेव परमेश्वर यच्च किंचित क्वचिदस्तु सदसद्वा किलात्मके तस् सर्वस्य आसक्ति सा त्वं किं स्तुष्यतदा यत्त्वा जगत्यापति यो जगत् सोऽपनिद्रावसंमितः कस्त्वामि स्तोतु महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महिषानेव च क्रेताते स्तोत्वांकः स्तोतुं शक्तिमानं भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संसुता मोहयतो द्वादशावसुरमुत्कैटभ प्रबोधं च जगत्स्वामी नितामुचितो लघु बोधचकितामस्सन्तु मे तो महासुरो श्रीर्वाच एवं विश्रुतातरा देवी तामसि तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभ नेत्राश्च नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरस निर्गमदर्शने तस्थो ब्राह्मण व्यक्त जन्मनौ तस्थो तो जगन्नाथस्य मुक्तो जनार्दन एकार्णवे अहिसय नात्ततः सददर्शितो मधुकैटभो दुरात्मानवति विपराक्रमो कोदरक्त श्रावन्तुं ब्राह्मणं जितोद्धमो समुत्थातस्ताभ्यां युद्धे भगवान् हरि पंचवत्सहस्राणि बाहुप्रहोरुणीभूताप्यते बलन्मत्तो महामाया मोहितो युक्तवन्तो रोहिस्मतो वृतामिति केशवम् श्री भगवान् वाच भवेत्तामद्ध में तुष्टो मम बद्धाव भावपि किमन्येन वर्णाते तावद्धि तम मम ऋषिर्वाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वपामोमयं जगत् विलोकिताभ्यां गत्वा भगवान् खं लेक्षण आवां जाहिन यत्रो विशैलेन परिलुप्ता ऋषिर्वाच तथेतुक्ता भगवता संचकृता गत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शीर्षेतयो एमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्था स्वयं प्रवमश्चा देव्यास्तु भूयुः शृणु वदामि ते ऐं ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। द्वितीयोऽध्यायः।
ओम मध्यम चैतस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्ण छंद साकर्म्य शक्ति दुर्गा बीजम वायु सत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चैत जपे विनियोग ध्यानम ओम अच्छस्तक पर सुंगदेश पुरुषं पद्मं धंस कुंडिकां दंडम शक्तिमसि च चरम जल जंग घंटा सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शन च दधतिं भस्ते प्रसन्नानां सेवे शरीर मर्दिनी महालक्ष्मी सरोजिस्ताम ओम ह्रीं श्रीवाच देवासुर समुद्भूतं पूर्ण शतम पुरा महिषासुरानंदीपे देवांच पुरंदे तत्तासुरे महावीर देवसैन्यं प्रायितं जित्वा सकलान् देवानिन्द्रो भून् महिषासुरं ततः प्रायिता देवा पद्मिनी प्रजापतिं पुरस्कृत्य भगता सत्य तेषे गुणोदजो यथावृतं तयो इस्त्वदन् महिषासुरशेषुतं तीर्थसाहस्रथया मा सूरदेवाभिविस्तरं सूर्यान्त्र्यान् इग्न्यनिन्दिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्यसां चाधिकारान् स स्वयमेवाधिष्ठिते स्वर्गान् निरगताः सर्वे तेन देवगुणा भुवि विचरन्ति तामित्या महिषेन्द्रात्मना तद्वगतं सर्वमरारिवचेषितं शरणं वप्रपन्नाय स्मो वधस्तस्य चिन्तिताम् तम निसम्य देवानां वचांसि सूदन चकार कोपम शंभुशक भ्रुकुटिकुटिलानो ततो अतिको पुण्य सुखिनो वदनातत निचकाम महत्तेजो ब्राह्मण संकरस्य च अन्यसां च देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमह तेजश्चैक्यं संगच्छत अतीव तेज सहकूटं ज्वलन्तमी पर्वतं दद्यसुष्टे स्वास्तात् ज्वाला व्याप्त दिगंतरम् अतुलं तत् तत्तेज सर्वदय शरीरजमिकस्तं तत् भून्नारी व्यापलोकत्रयं दिशा यद भुक्षां भवं तेजस्तेन च तन्मुखं याम्यं च भुवनकेशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्यनिस्तन योजुग्मं मध्यम चंद्रन चावत वर्णन च जंघोरुनितंबस्तेजसा भुव ब्राह्मण तेजसा पादो तदंगुल्य तेजसा वसुनां च क्रांगुल्य कौबिर्यं च नासिका तस्यास्तुदन्तः सम्भूतः प्रजापत्येन तेजसा नयन्दित्रयं जगन् तथा पावक तेजसा भ्रोज संध्योत्तेज सर्वनावनि च अन्यसां च देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर्महिषादिताः शूलं शूलाद् निष्कर्षं ददौ तस्य पनागधक चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पादः सुचक्रतः शङ्खं च वर्णशक्तिः ददौ तस्य हेवतासने मारुतो दत्त्वा शापं बाणपुण्यतथे सुधे वज्रबिन्दः समुत्पादः कुलिसादमराधिप ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामयर्वाद्गजात् कालदण्डात् दमोदण्डं पाशं चाम्बुपथे ददौ प्रजापते चक्षमानं ददौ ब्रह्मा कमण्डलं समस्तरूपं कृपेषु निचरस्मिं दिवाकर कालस्य दत्तवान् खड्गं त्याचरं च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजे च थाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डलेकटकानि च हरचन्दनं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वत् ग्रहवैकमनोत्तमम् अङ्गुलीकरत्नानि समस्तस्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा दौतस्य परशुं चात निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेदं च दंसनम् अम्लान् पङ्कजामाला शिरस्यूरस्य चापरम् अदजलधितस्यै पङ्कजं चाति सोमनं हिमवानवाहनं सिंहरत्नानि विधानि च तदा शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्य धत्तेय पृथ्वीमाम् अन्यरूपैः सूर्यदेवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता निनादोच्चैः षट्ठः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नामापूरितं नभा अमायातति महता प्रतिशब्दो महानभु चक्षुः सकला लोका समुद्रस्य च कंपिरे चालवसदा चेरु सकला च महीधरा जयति देवास्य मुदा तामुचु सिंहवानिं तुष्टुर्मुनेश्चन्या भक्तिनम्रात् मूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यमरार्यः सन्नद्वाखिल सन्न्यास्ते समुतस्तुरुदायुधा आह किमे तदिति क्रोधादावस्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दं शेषैः सुरेवतः सतदशतो देवी व्याप्तलोकत्रयां दिशा पादाक्रान्त्या नतभुं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभितशेषपातालं धनुर्जानि सुनेन्ताम् दिशोभुज सहस्रेण समस्ताद्व्याप्तसंसतां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरदिशां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरसैन्यां चतुरङ्गबलान्विताः रथानां युतैः षड्भिरुद्रग्राख्यो महासुरः अयोध्यतायुतानां च सहस्रेण महानु पञ्चाशदभिश्च नियुतैर्सुरोमा महासुरः अयुतानां तैः षड्भिर्वास्को युधैरणे गजवाजी सहस्रोर्घैरनेके परिवारतः व्रतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धतः विरालाख्ययुतानां च पञ्चाशदभिर्थायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारतः अन्ये च तत्रायुधसो रथनागहैव्रताः युधे संयुगे देव्याः सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रतु रथानां दन्तिनां तथा हयनां च तो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्विन्दिपालैः च शक्तिभिर्मुसलैः तथा युधे संयुगे देव्यः खड्गैः परशुपटशैः केचित् चिक्षुभशक्ति केचित् पाशा तथा परे देवीं खड्गप्रहारेस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्रास्त्राणि चाण्डिका लीलया प्रचिच्छेद निःशास्त्रात् वर्षणि अनायस्तन्ना देवी स्तूयमाना सुवर्षभिः
भूमचासुर्देहेषु शस्त्रास्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुष्टो देववान् केसरी चचारासुर सन्येषु वनेषु सुतासन निःश्वासन मुंचे यांसु युद्धमानरणे अंबिका तेव सद्ध संभूता गणासद सहज सहयुधस्ते परसु बिंदिपाले से पटसे न्यासंतो सुरग्रान देवी शक्ति उपब्रह्मिता अवाद्यंत पटहान गणा संखास तंत्रापरे मृदंगाच थैवाने तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी सूर्यन गदया शक्ति वष्टवे खड्गात विशतसो विजिघान महासुरान पात्यमा चैवान्यान घंटासवनि मोहितान अस्वान् भुवि पासेन दध्वाचान कर्षत केचित् द्विधा कताक्तिक्षणे खड्गपाता पातय स्थापने विपोदितानि पातेन गदया भुवि सेते वेमुचिके चे दुधिर मुस्लिम संगताः केचित् निपतिता भूमो भिन्नाः सुरेन वक्षसि निरन्तराः सरोगेन कृता केचित् नाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः केशाञ्चितवा छिन्न छिन्नवागेव स्थापरे शिरांश पेतुरन्ये सामन्ये मध्ये विदायिताः छिन्न जिह्वा स्थापरे वेतुरभ्य महासुराः एकभाग चिचिर्णा केचित् दिव्यादिधा कृताः छिन्ने चापि चान्ये शिरसि पतिताः पुनुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्याः गृहीत परमायुधा नन्ताश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यल्यासिताः कबन्धा छिन्न शीर्ष खड्गशक्तष्टिपाण्य तिष्ठति भाषान्तो देवी मन्ये महासुराः पादितैरत्ना गयेश्वरेश सुरेश सुंदरा अगम्या साव सत्रावस महारण सोमितोगा महानद सद्ध सत्य प्रसुस्तुभो मध्य चासु सैन्यस्य वारणासुर वाजिनां छणेन तन् महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्यचयं यथा वहनि तृण दारु महाचयं सच सिंहो महानाद मुत्सजन्धुत्केसर शरीरेभ्यो मारी राम सोनि चिन्वति देव्या गणेश तः सत्रकृतं युद्धं महासुरै यथे साधु तुतुसुरदेवा पुष्पवृष्टिं चोदिभिः ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् ओम दध्वानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमं शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोधरां जपुटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जयदितिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविद्यश्रियं देवी बध्यमान् सुरक्तमुक्तां देवी वन्दे अरविन्देशताम्। ओम ऋषिर्वाच निहनमानं तस्य नवलोक्य महासुर सेनानि चक्षुर कोपाध्यो यो दधुमताम्बिका सदेवी सर्वर्षेण वर्षे समरे सुरेथा मेरि गिरेः संगं तोय वर्षं तोयदः तच्चिता तो देवी लीलय सरोत्कान् जघान् तुर्गान् बाणयन्तारं चय वाजिनां चिच्छेद च धनुसद्धो ध्वजं चाति समुचितं विव्याध च गातेषु छिन्न धनुमान् मासुगै सचिन् धन्वा विवृतवता सुवोत सारथि अभ्यधावत तां देवी खड्ग चर्म धनुवसुराः सिंह महात्य खड्गेन तीक्षधारण मूर्धनि आज खान भुजे सभ्य देवी मप्यत वेगवान तस्या खड्गो भुजं प्राप्य प्रफालनपनंदन तत्व जगह सूरम स कोपातरुण रोचना चिचेप ततस्तु भद्रकाले महासुर जाजोलमानं तेजोभिरवि बिंब विवाम्बरात् दष्ट्वा तदा पदक्षूलं देवी शूलं मुञ्चत तत्शूलं सद्धातेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्य महिषस्य चमुपतो आजगां गजारूढश्चामास्त्रीति सार्धन सोपे वशक्ति मोचात दिव्यास्ताम्बिकादुतं हुंकाराभिता भूमपात्यमस निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपातितं तां दृष्ट्वा क्रोध समन्वित चिक्षेपचां वरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणद तथा सिंहं समुपत्य गजकुम्भान्तरे स्थिति बाहुयुद्धेन युद्धे तेनोच्चय स्थितिशालिना युध्यमानो ततस्तो तु तस्मानागंहिंगतो युधाति संरब्धो प्रहारारेश दारुणै ततो वेगात् कुमुपत्निपतचमगारिणा करप्रहारेण शिरश्चाम्र पृथक्कृतं उदगश्रेण देव्या शिरावक्षात् भिलित दन्तमुष्टि तलेश्च क्रालच निपातितः देवी क्रुद्धा गदापात चूर्णिमा चोदितं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्समुखवीर्यं च तथैव च महानु त्रिनेत्रा च सूर्येण जघान परमेश्वरी विरलास्या सिनकायात् पात्यामास वैशिर दूरधरं दुर्मुखं चोभो सरनित्यं यमक्षयम् एवं संक्षीमाणे तु स्वसन्ने महिषासुर मायसेन स्वरूपेण त्रास्यमास्तान्गणान् कांश्चित्तुन्द प्रहारेण खुरक्षेपय स्थापनान् लाङ्गूलताडिश्चागाम्भ्यां च विदायितान् वेगेन कांश्चिद् प्राणादेन भ्रमणेन च निश्वास पौनेनान्यं पात्यमास भूतले निपात्य प्रमथानि कमभ्यधावत् सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्यः कोपं चक्रेत तोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षणमहितलः संगम्भ्यां पर्वतानुच्चाचिक्षेप च नाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णां महितस्य विसीर्यते लाङ्गूलेन तस्याब्धि प्लावयमास सर्वतः द्रुतसङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं योधना श्वासनीलास्तासत्सो निमेतुर्नभसो अचलाः इति क्रोध समाध्यमात्मापतन्तं महासुरं दष्ट्वा स चण्डिका कोपं तदा क्रोध सचिप्त्वा तस्य वैपासं तम्बबन्ध महासुरं तत्याजमाय संरूपं सोऽपि बद्धो महामदे तथा सिंहो अवसद्धो यावस्याम्बिकास्य छिनन्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणि दशत तथैवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्ध तथा सोऽभून् महागज करेण च महासिंह तं चकर च
कशस्तु क्रम देवी खड्गे निर्कंततः ततो महासुर भूयो महासंवा प्रासिते तथे क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः कुद्दा चरणमाता चंडिका पानमुत्तमम् पपो पुनः पुनः च जहा सारुण लोचनान् नरसा सुरसोपि बलवीर्मदोदुत विषाणाभ्यां जिच्छेव चंडिका प्रति भूधरान् साजतान् प्राहितास्तन् चोरयन्ति सरोत्करै वाचतं मदोदधूत मुखारागा कुलाक्षरं देव्यवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतस्तै गर्जस्त्यांसु देवताः ऋषिवाच हे मुक्ता समुत्पत्ते सारूढा तं महासुरं पादेनकं कंठे च शूलेन ताड़यत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्थाने खातत अर्धनिष्कांत एवासो दिव्यावीर समृत अर्धनिष्कांत एवासो युद्धमानो महासुर तया मयास्य महासिना दिव्या सुरक्षित्वा निपादित ततो हा कथं सर्वदैत्य सैन्यं नासत प्रहर्ष परम जगमु सकला देवतागणाः तुष्टुष्टां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षभि जगुर्गन्धर्पत्यो नन्ताप्च सरोगणा ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। चतुर्थोऽध्याय ओम कालाभ्राभ्रम कटाक्षर कुलभेदा मौलिबंधन रेखां शंखं चक्रं कृपाणं ते सखमपि करेरुद्धन्ते त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्याय दुर्गा जयाख्यां तेजस्फुरितां सेवितां सिद्धिकामयि ओम ऋषिर्वाच सक्रात्यः सुरगुणा निहत्ते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुराजबले च दिव्या तां तुष्टुः पुनर्तनमिशिरोधरांस वाग्भिः प्रहस पुलकोद्गम चारुदेहः दिव्यायया तद्विदं जगदादं शक्त्यानि शेषदेवगणशक्ति समूह मूर्त्या तामम्बिकाखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्यानता स्म विदधातु शुभानिशानः यस्याः स्वभावप्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मरहस्य हि वक्तमूलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नासाय च शुभभयसमतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतीनां भवने लक्ष्मी पापात्मा गतधियां विदेश बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन भवसलज्जातां त्वां नतामि सपरिपाल देवी विश्वं किं वर्णयां तव रूपं चिन्तयेतत् किं चाति वीर्यं सुरक्षकारी भूरि किं चावैषु चेतानि तमाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरदेवगणादिकेषु हेतु समजगतां त्रिगुणापि दोषेन ज्ञासे हरिहरादि भ्रप्यपारा सर्वासर कृतं जगदसमुत मव्यागता परमा प्रकृतेष्वमाध्यात्स्या समस्या समुदीरेण तप्ति प्रयाते सकलेश मुखेश देवी स्वाहा से पितृग्रस्त च तप्त हेतु चाय से तुमतेव जन सुधा च या मुक्त हेतु विचित्य महाव्रतात्वमभ्यसे सुनीतेन्द्र सत्तुसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनि भिरस्त समस्त दोषै विद्यासी सा भगवते परमाहि देवी सदात्मिका सुविमल जुषा निधान मुद्गीतर मे पद पाठवतां च सामनां देवी तयि भगवती भव भावना वार्ता सर्वजगतां परिमार्ति हन्ति मेधास देवी विद्या की सारा दुर्गा दुर्ग भव सागर नौर संघासी कैट भारी देखता दिवासा गौरी तुम्हें शशि मौलिकत प्रतिष्ठा ईशत्सहाम समम चलम परिपूर्ण चंद्रम बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतं प्रहतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भुकुटे कराले बुद्धक्ष संघ सद्दक्षवी यन्न सद्द प्राणान्मोच महिषस्तुदे चित्तं के जीवते हि कुपितान् तगदर्शनेन देवी प्रसिद्ध परमा भवति भवाय सद्धो विनाशसि कोपति कुलानि विज्ञात मे तदधौ नैव यदस्तमेत नीतं बलं स्वफलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धन्यां तेषां विशांसि न च सिद्धधनुवर्ग धन्यास्तेव निभृतात्मजभृतदारस्य येषां सदाभ्युदयदा भवते प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादतः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गप्रादि च ततो भवति प्रसादान् लोकोत्तरेऽपि फलदानं देवतेन दुर्गे स्मृतार्सवितं सहसन्तोः स्वस्थैः स्मृतामतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कातुतन्या सर्वोपकारकर्णा सदाचित्ता हे विहर्ते जगदुपैते सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मतवेति नूनमहितान् विनिहंस देवी दृष्टैव किं न भवति प्रक्रोधि भस्म सर्वास्वानरेषु यत् प्रहीणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपुभिः शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेषु प्रीतेति साध्वी खड्गप्रभा निकर विस्फुरणैः तथोग्रैः सुलाग्रकान्तिनिवेहेन्द्र सुवस्त्राणां यन्नागता विलयमंसुन्दखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतद्वृत्तशमनं तव देवी शैलं रूपं दथय तद्विचित्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तु हतप्रदे पराक्रमणं वरीसुपि प्रकटितैव दयातवेत्तं किनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्याति हारिकुत्रचिते कृपासवनिष्ठा चतुष्ट्वा त्वेदेव वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रिलोक्यमे तदेखिलं रिपुनाथयन्त्रातं त्वया समन्मूर्धन् तेऽपि हत्वा
नीतादिवं रिपुगुणा भयमपपास्तमस्माकमुन्मदस्वारिभुं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन पाहि चापज्ञानि सुनेन च प्राच्यां रक्षपतिच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे तान् शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति यानि चात्यर्थ घोराणि तैरे रक्षा समाज तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं सुता सुरैर्दिव्यै कुसुमेन नन्दनोद्भवै हरितां जगतां धाते तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तैस्त्री दशै दिव्यै धूपैः धूपिताः प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच ब्रीयतां तेजसः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्यागतं सर्व न किञ्चिदवशिष्यते यदहं निहितः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेतः परमापद यस्य मृत्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तद्विविभवैर्धनदारादिसम्पदां वध्येत् प्रसन्ना त्वं भवेथः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली भुवान्तरिता नृप इत्येतत् कृतं भूप सम्भूताय सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यः जगद्हितैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनि शुम्भयो रक्षणा च लोकानां देवानुपकारिणीं तक्षुषो मयाख्यातं वद यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम भगवती दुर्गादिव्यै नमः। पंचमोऽध्याय। ओम अस्य उत्तरचरितस्य रुद्रऋषि महासरस्वती देवतानुष्टुप छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यासत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ओम घंटाशूल हलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्तैर्जयदधितिं घनान्तविलसक्षितांस्तुल्यप्रभां गौरीदे समुद्भवां तेजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत सरस्वती मनुभजे शुम्भादित्यादिनीं। ओम क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भ निशुभ्याभ्यां सुराभ्यां सचिपते त्रैलोक्यमृगभागाश्चहतामदभ्राश्रया तावे सूरितां तद्वधिकां तथैन्दवं कौबेर्मतयां व्यं च चक्रातेवं च तावे पौनधि च चक्रतु हि वनकर्म च ततो देवा विनिर्धूताः भ्रष्टराज्याः प्रायिताः हिताधिकारास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी संस्मृत्य प्रायितं तया अस्माकं वधो दत्तो यथा स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्सन् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं जगेश्वरं जगमुस्ततो देवी विष्णुमायापतुष्टुभूः देवाऊचुः नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्तं नमः नमः प्रकृते भद्राय नीताः प्रणताः स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिणे सुखासक्तं नमः कल्याणे प्रतां वृद्धे शुद्धे कुर्मे नमो नमः नैत्यै भवतां लक्ष्मे सावर्णे ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्यै दुत्यै कृष्णाय धूम्राय सत्तं नमः अतिसौम्यादि रौद्राय तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने विधीते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु प्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणां धिष्ठात्री भूतानां चाक्रियस्य भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेप्यै नमो नमः चतुर्पेण न्याक्तस्मै तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः ईशतासुरैः पूर्वं भीष्मसंशयः तथा सुरेन्द्रेन्द्रेण सेविता
क्रोधुषाण शुभहेतुषु शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदया साम्प्रतं चोद्व तदैत्यापि तैरस्माभिरिसा च सुरेण वसते या च स्मृता तच्छन्मे हन्ति न सर्वपदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिवाच एवं भक्तिस्तवादिक्तनं देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये च नव्यानपनन्दन सावृतांसुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तुयत्रका शरीरकोश तस्यास्याः समुद्भूता वृक्षवा स्रोतमोमेदत् कृते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समेन शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशः दास्तस्याः पार्वत्याः निष्ठाम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तो लोकेषु गीते तस्यां निर्गतायां तु कृष्णाभूतापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलगतास्या तो अंबिका परम रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददश्चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय साख्याता तेषु मनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाषन्ते हिमाचलं नैव तादृक कुचिद्रूपं द्रष्टं केन च दुत्तमं ज्ञातं कापसो देवी गहतां च सुरेश्वरस्त्रीरत्नयं ते चावङ्गे धोत्यन्ते दिशद्विषा साधु तिष्ठन्ते दैत्यन्तां भवान् दष्टुर्महति यानि रत्नानि मणियो गयस्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ते गृहे ऐरावतः समाहितो गजत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः सर्वाहयः विमानं हंस संयुक्त मेततिष्ठन्ति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानितं युवेदासीद्वेषोद्धतं निषेधमहापद्ध समानितो धनेश्वरात् किञ्चग्निन्दो चाब्धिन् मालान् पङ्कजां छत्रं तेवार्णं गेः चाञ्चनं तिष्ठति तथा सन्दोरो यः पुरासित प्रजापते मृत्युर्कान्तानां शक्ते सत्वाः तथा पासं स्वराजस्य भ्रातुस्तः परिगृहे नुसंभस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजाते वह निरपेद दौतभ्यमग्नि शोचे सवाससी एवं दैत्येन्द्र रत्नाय समस्तान् हितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणे त्वया किं कस्मान् गृहीते ऋषिर्वाच सम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयो पेशयामा स्वगिरं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या स गत्वा चानुम यथा च भेदि सम्प्रीत्या तया कार्यत्वया लघु स तत्र गत्वा तत्रास्ते शैल्यो देशो दिशोभने तां ततो देवी तन्विस्पृहामधुरा गिरा दूतवाच देवी दैत्येषु शुम्भस्तलोके परमेश्वर दूतों पेस्तस्तेन त्वत्काशमिहागत अव्यहताख्य सर्वासु यः सदा देवयोनिषु नैताखिल दैत्यारिः सदा सुसुतत मम त्रिलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानं सर्वानुपासनामि पृथक् पृथक् त्रिलोक्ये वर्तनानि मम वश्यानस्य सतः तथैव गजत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमस्वरत्नं मामरैः उच्चैः सर्वसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तान्मय शोभने स्थिरत्नभूतां त्वं देवी लोक्यमन्यां महे वयं स्वातस्मानुपाकक्षेतो रत्नभुजोऽयं मां वा मानुजं वापि निशुम्भमरुविक्रमं भजतं चञ्चला पाङ्गिरत्नभूता शिवयतः परमेश्वरमतलं प्राप्य से मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिहृतां भज ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी तां गम्भीरान्तः सुता जगो दुर्गा भक्ति भद्राय इदं धायते जगत् देव्यवाच सत्यमुक्तं त्वयान्नात्र मिथ्या किञ्चित् ओदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं त्वत्र यति प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं सुवितामल बुद्धित्वा प्रतिज्ञाय कदा पुरा यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्प विपोहति यो मे दर्पति लोके समय भूता भजति तागक्ष शुम्भोऽत्र निशुम्भो महासुर मा जित्वा किं क्षेणात्म पाणिं गृह्णात् मे लघु दूतवाच विदितासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममागतः त्रैलोक्ये कः पुमां इष्टशतग्र शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्थितमेकिका इंद्राद्धा सकला देवास्थर्युषां संयुगे शुम्भादीनां तथा केषां स्त्रीप्यासि सम्मुखं सा त्वं गच्छमयोर्वक्ता पार्श्वशुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षनिर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्यवाच एवमतिमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भश्चाप्ति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे धनालोचिता पुरा स त्वं गच्छमयोक्तं ते यदे तत्सर्वमादत तदा चक्ष्वा सुरेन्द्र स च युक्तं करोतु तत् ओं श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओं दुर्गादेव्यै नमः। षष्ठमोऽध्यायः। नागाधीश्वर परिविष्टां फणिप्रोक्तं सुरत्नावली भासधैर्यतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्चूणां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्गनिलयां पद्मावती चिन्ते। ओं ऋषिर्वाच इत्याक्रमचो देव्याः स दूतमस्फूर्तः समाचस्य समागम दैत्यराजा विस्तरात् तत्सदूतस्य तद्वाक्याकर्याश्वार्थतः सक्रोधः प्राह दैत्यानां दीपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारतः तामानय बलादष्टां केशः कृष्णविमलां तत्परित्राणः कश्चिदधिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वे वा
ऋषिर्वाच तेनाज्ञाततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः षष्ट्या सहस्त्राणां सुरानुतमेयो सदष्ट्वा तां ततो देवी दुहिना च संसितां जगादोच्चे प्रियाहेति मूलं सुम्नि संभयो न चेत्प्यद्याद्भवति मध्वर्तामुपैसति ततो बलान् याम्ये सखे कर्षन् विहुलां तेभ्यवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसम्मितः वनान्यसि मावेव ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिर्वाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावतां सुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेण तं भस्म चाचक्राम्बिकादतः अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां दत्ताम्बिकां बवर्षायकैस्ते क्षणस्तथा शक्ति प्रसुधै ततो दुःसुटः कोपा कृत्वा नादं सुभैरवं पपाता सूर्यसेनायां सिंहो तेभ्यः स्ववाहनः कांसितकरप्रहारेण दैत्यानाशेन चापनान् आक्रम्य चाधरण्यान् सजघान् महासुरान् केशाञ्चित् पाटयामास कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विचिन्नभाव शीर्षः कथास्तेन तथापि पपोचरुधिरं कोष्ठाधन्य सान्दुत्केसर क्षयेन तद्बलं सर्वं क्षयन्वितं महात्मना तेन केसरिणा देव्यः वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्यः नीतं धूम्रलोचनं बलं च चैतं कृष्णं के देवी केसरिनादतः चुकोपदत्यादिप्ति शुम्भः स्फुरिताधर आज्ञापयामास चतो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्भिपरिवारितो तत्र गत्वा सह समानितां लघु केशेवाकस्य वदध्वा वा यः दिवः संसयुधि तदा शेषा युधैः सर्वैः सुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां मतां दुष्टां सिंहतविनिपादते शीघ्रमागम्यतां वदध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम् ओम श्रीभूते दुर्गादिव्यै नमः। सप्तमोऽध्यायः। ध्यानम् ओम ध्याये रत्नपीठे सुखकल्पितं सुनवती श्यामलांगी नतये कांक्षी सरोजसकलधरां वल्लीकिं वादयन्तीं कहवरवदमाला निमित्तविलासच्चौलिकानुत्तवस्थां मातंगी संघपात्रं मधुरमधुरदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते दतो दैत्या चण्डमुण्ड पुरोगमाः चतुरङ्गवलोपेता ययुरभ्युता दशुस्ते सो देवी मे सदृशं व्यवस्थां सिंहस्योपरि शरीरनन्दे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समाधातु मुद्धमं चक्रुरुद्धताः आकृष्टचाप श्रीधरास्तथ धान्ये तत्समीपकाः ततः कोपं चारोच्चैरम्बिका तान् नृपति कोपेन चास्या वदनम् श्रीवर्णभूतदा भुकुटिकुटिलास्तास्य ललाटफलकादद्युतं काली कालवदना विनिष्कान्तास्य पाशनि च विशुद्ध खडवाङ्गधरनरमालय भीषुणा दीपचरण परिधान शुष्कमान साथि भैरवती विस्तार बदनान जिह्वालन भीषणा निमग्नार्तनयना नादा पूरित दिङ्गमुखा सा वेगेना भीपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्य तत् सुरारीणां भक्षत तद्बलं पाशनिग्रहाङ्कुश गृहीयोधघण्टा समन्वितं समादयक हस्तेन मुखे जिच्छे वार्णं तथैव योधं तुर्गैरथं सार्थिनाश चप्रवक्ते दर्शनेश्वरति भैरवम् एकं जिग्रह केशेषु गिरिवायामत् चापं पादेन क्रम्य चैवान्यमूरसान्यम पोथेद तैर्मुक्तैः च शस्त्राणि महासैन्य तथासुरैः मुखेन जग्रह रुषा दर्शनैर्मथितान्यपि वलिनां तद्बलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां मुमर्दा भक्ष्यच्यान्याश्चात्तार तथा असिना निहितः केचित् खड्वाङ्गतायिताः जगमूर्विनाशं सुरा दन्ताग्राभिहस्तासुता क्षुणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपादितं दृष्ट्वा चण्डेन अभिदुद्रावतां कालीमति भीषणां सर्ववर्षैर्महाभीर्मय भीर्माक्षितां महासुर छादयामा चक्रस्य मुण्डक्षिप्तैः सहस्र तानि चक्राणि मेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूव यथाग् बिम्बानि सभूनि घनोदरं ततो जाहा सातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली क्रालवक्तान्तर दूरदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महांस्यं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेन श्रीनाक्षणत अथ मुण्डेऽवधावतं दृष्ट्वा चण्डनिपादितं तमप्राप यद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हस्ते ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डनिपादितं मुण्डं च सुमहावीर शोभेज भयातुरं शिरचण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राहपचण्डाट्टः समीसममित्येत चण्डिकां मया त्वा त्रोपतो चण्डमुण्डो महापुषो युद्धज्ञे स्वयं शुम्भं च निशशिवाच तवानि तो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो वाचकाली कल्याणी जनितं चण्डिकावच यस्मा चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वं पागतः चामुण्डेति थोर्लोके ख्याता देवी भजसि ओम चतुर्गादिव्यै नमः। अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम् ओम अरुणां करुणातरङ्गिताङ्क्षि गतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्यै विभावै भवानीं ओम ऋषिर्वा चण्डे च निहते दैत्य मुण्डे च निपादिते बहुलेषु च सन्न्येषु क्षयते सुरेश्वर ततः कोपपराधीन चेतः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलै दैत्याः सरसा तीरुदायुधः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलिवृताः कोटिवीराणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञा कालिकादवाद मौर्या कालकेया तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यन्तु आज्ञातोतामम इत्याज्ञाप सुरपति शुम्भो भैरव शासन निर्जगां महासैन्य सहस्रै बहु भीर्वत
आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यति भीषणं ज्यासुरेण पूरयामास धनी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मति कृतवान् नृप घण्टासुरेण तन्नादम्बिका चोपब्रह्म्यत धनुर्जा सिंह घण्टाना नादापूरित दिङ्गिमिका निनाद भीषणे काले जिज्ञे विस्तारतानना तम निनादम सुत्य दैत्य सन चतुर्दिशम देवी सिंह तथा काले सरोसे परिवारतः एतस्मन्त्रे भूप विनाशः स्वदिशं भवायामर सिंह नामतिविलान्विता ब्रह्मोस गुह विष्णुरं तथेन्द्रस्य शक्त्या शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपैश्च निकामयो यस देवस्य यद्रूपं यथाभूषण वाहनं तद्वदेव हि तक्ष रिक्तर्सुरान् योद्ध मायेयो हंसिक्त विमानाग्रे साक्षसुत कमंडलु आयाता ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मण साविधेते बाहेश्वरी वृषारूढ़ा तिस्वरावर धारणी महाहिवल्या प्राप्त चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवर वाहना योद्धमभ्याययो दैत्यानंबिका गुहि रूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुणोपरि संस्था संगचक्रदासारं खड़गहस्ताभ्यायुपायो यज्ञवारा मतलं रूपम या बिभतो हरे शक्ति साप्याययो तत्र वाराहि बिभते तनुं नारसिंहेन सिंहस बिभते सद संवपो प्राप्ता तत् सटाक्षेपक्षेन चत संगति वज्रहस्ता थैवेन्दी गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रेण यथा शक्रस थैव सा सतः परिवृत्तस्ताभिरिशानु देव शक्तिवि हन्यतां सुराशेखर मम प्रीत्याह चंडिका ततो देवी शरीरास्तु विनिष्कांता भीषणा चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाजुम्र जटिलमीशानं प्रायिता दूतत्वं गच्छ भगवान् पार्श्वमुनि शुम्भयो ब्रूहि शुम्भं शुम्भं च दानवावती गर्भितो ये चान्ये दानवः सत्ययुद्धाय समुपस्थिताः त्रिलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीविति मुक्षतः बलावलेनापच्छेद्वन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तप्यन्तु मक्षिवापिस्तेन यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतो ते लोके स्मृतः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः सर्वख्यातं महासुराः अमरसापूरिता जगमुनित कात्यानि सिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्यष्टभि ववर्षुस्तन्मातदेवीम प्रार्य साजतान् प्रहितान् बाणशूलशक्ति प्रसदान् चिच्छेलील्य अध्यमात धुन्मुक्ते सहर्षभि तस्याग्रस्तथा काली शूलपातविधातान् खटवाङ्गपोथिश्चारेण कुर्वतीव च सदा कमंडलु जलाक्षेप हतवीरतोष ब्रह्मणे चाकरोचस्तुन येन स्मधावती माहेश्वरी सूर्यन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याजघन कौमारी तथा शक्त्यति कोपना ऐन्द्रिकृत पातेन सतसो दैत्य दानवा वेतु विदाय तापत्यभ्या रुधिरोग प्रवर्षिण तुंड प्रहार विध्वस्त्वा दष्टाग्रक्षत वक्षस वरामुत्यान पस्तक्रेण च विदायता नखै विदारि साक्षान् वक्षन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चंडः शैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पितुपृथिव्यापतेता खादा सातता इति मात्रग्रहं क्रुद्धा मर्दयन्तं महासुरान् दष्ट्वाभ्युपाये विविधैर्नैर्षुदैवारि सैनिकाः पलायन दष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणारितान् योद्धमभ्यायो क्रुद्धोरक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुहृदा भूमौ पतस्य शरीरतः समोत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे जगदा पाणिरिन्दशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्रि स्वभज्य रक्तबीजं ताडयत् कुलेशाना तस्यासु बहुसुस्ताव सोहितं समुतस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तपराक्रमः यावन्तः प्रतिष्ठा तस्य सहिताक्तबिन्दव तावन्तः पुरुषा जातास्त्वदीर्बलविक्रमास्ते चापि धूषतपुरुषारक्तसम्भवाः सममात्तभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरोवेदा विवारक्तं पुरुषासतो जातः सहस्रशः वैष्णवीसंभे चैन्यं चक्रेणाभिजघान गदयाताडमसैन्दितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्त्राव संभवे सहस्रशो जगत व्याप्तं व्यतत प्रमाणे महासुरै शक्त्या जगान कौमारी वाराहि च थासिना माहेश्वरी सूर्येण रक्तबीजं महासुरं स चापि गद्या दैत्यः सर्वा एव हनपृथक् मात्रकोपसमाविष्ट रक्तबीजो महासुरः तस्यातस्य बहुधा शक्ति शूलादिभिर्भुवि पातयो वै रक्तो घस्तेन संक्षतो असुराः तैश्चासुरासग शम्भुतैः सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विश्रान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रासत्वरा उवाच काले चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षितं वक्त्रे नानेन वेगिना भक्ष्यन्ते चरणतोत्पन्नान् महासुरान् हेमेश क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्तः चोग्रां न चोप्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काले जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावाज घानाथ गद्या तत् चंडिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो कामपि तस्यातस्य देहात्तु बहुसुस्ताव शोणितं यदा दत्तेन चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा
तांस खादा चामुंडा पोतस्य सोनितम देवी सुरेन वज्रेण बाणैरभीष्टभि जघान रक्तभि जंतम चामुंडा पीत सोनितम सवपात मही पृष्ठे शस्त्र संग समात निरतस्य मही पाल रक्तबीजो महासुर तस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रित सानप तेषां मात्र गणो जातो नर्दा संघमुदोद्धत ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। नमो अध्यायः ध्यानम् ओम बंधूक कांच निर्भम रुचिराक्षमालां पाशांकुशो च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राण बिंदु स्कलाभरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बि केशं निशं व पुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमख्यातं भगवन् भवतामोम देव्याः सहित महात्म्यं रक्तबीजवधासितं भूयच्छाम्यं श्रोत्रतिबीजनिपादते चकार शुम्भो यत्कर्म शुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिर्वाच चकार कोपमत्रक्तबीजनिपादते शुम्भासुरन् शुम्भश्च तास्वे हतसावे हनुमानं महासैन्ये विलोक्य महर्षमुद्धन अभ्यधावन्नि शुम्भोत मुख्याया सुरसेनया तस्याग्रसथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्धष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तु देवीमुपायुः आजिगं महावीर्यः शुम्भोऽपि सबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपः कृत्वा युद्धं तु मातवे ततो युद्धमतीवासि देव्याः सुमुनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोर्युवर्षतो चिच्छेदासदास्ताभ्यं चण्डिका सरोत्करे ताडयामास्याङ्गेषु शस्त्रौघे सुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताड़मूर्तिं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताड़ते वाहन देवी शूरप्रेणासमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचापचन्द्रकं छन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेद सोऽसुरः तमाप्य सुधाचक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाध्यमातो निशुम्भोवत् शूलं जग्रह दानव आयात पुष्टिपातं देवी तच्चापचूर्णयत् आविद्याद्गदां सोऽपि चिच्छेव चण्डिकां प्रति सापि देव्याः त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत देवी बाणो घैरपातित भूतले तस्मिन् पत्ते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातर्यर्ति संक्रुद्ध प्रयो हन्तुमम्बिकां सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुले व्याप्याशेषं बभो नभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषस्यकारातिदूषं पूरयमास्कको निजघण्टासुरेण च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवध विधायिन तथा सिंहो महाना दैत्याजिते महामदैः पूरयमास गणंगं तथैव दिशोदशः कातः काले समुत्पत्य गगनं क्षमताड़यत् कराभ्यं तन्नादेन प्राकस्वान्ते त्रोहितः अट्टहासं शिवं शिवदूते चकार तैः शब्दैरसुरास्तेषु शुम्भकोपं परमेयो दुरात्मतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवेरका संस्थैः शुम्भेनागत्या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वह्निकूटा भासा निहस्ता मोहल्क्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिः सुनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्तान् देवी शुम्भस्तप्रहिताक्षरान् चिच्छेद स्वस्वरैरुग्रे शतशोधसहस्रः ततः च चण्डिका क्रुद्धा स्थूलेनाभिजघान्तम् स तदा भीतो भूमौ मूर्छितो निपातः ततः निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनात् कार्मुक आजघानशरैर्देवी काली के श्रीणां तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम्युतं धनुजेश्वरचक्रायुधन्दिते जच्छादयाम चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशं चिच्छेतान् चक्राणि स्वस्त्रैः सायकान्तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकां बभ्यधावद वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत् एवासु गदां चिच्छेद चण्डिकां खड्गेन निश्चितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनम् यदि विव्यात् शूलेन विज्ञा विद्वन् चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्ने सतोपर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् ततः तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सुनवत्ततः शिरसिच्छेद खड्गेन ततो अशापवद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दष्टाक्षुणशिरोधरान् असुरास तथांकाली शिवदूते तथा पुराण कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेषु महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तो ये नान्य निराकृताः माहेश्वरी सूर्येन भिन्ना पेतु स्थापरे वारायतुन्यघातेन केचि चूर्णिकृता भुवि खड्गं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वैज्येन सैन्द्रिहस्त्राग्विमुक्तान् तथा परे केचिद्वेने सुरसुराः केचि नष्टा महाहवात् भक्षिताः च परे काली शिवदूती मृगाधिपै ओम चतुर्गादिभ्यै नमः। दशमोऽध्याय ओम तत्तेम रुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुशरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्ये भुजस्य दधतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदीं भजामि हृदेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिर्वाच निशुम्भं निहितं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो अब्रवीद्वचः बलावलेपातुष्टे तुम्बा दुर्गे गर्वमाव अन्यसां बलमासित्येति मानिनी
देव्यवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया मा परा पश्यता दुष्टमये सन्त्यो मद्विभूतिः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनो जगमुरेकैवासि तदाम्बिका देव्यवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदासिता संहत्य मयैकैव तिष्ठाम्याजुष्टरो भव ऋषिवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्याः शुम्भश्च चोभयो पश्यतां देव सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षहितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्य सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सतसो मुचे यान्यथाम्बिका भवन्तान् दैत्यान् प्रतिघातकर्तव्य मुक्तानि तेन चास्तानि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलि लिए गए वो ग्रहाच चरणादभिः ततः सरस्वती देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुच्छेद चेसुभिः चन्य धनुषे दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेद देवी चक्रेण तमाप्यस्करे स्थितां ततः खड्गमुपादा सत्चन्दं च भानुमुत्तभ्य धावत् ततां देवी दैत्यानामादिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते सितये बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वसन्तदा दैत्यश्चिन्य धन्वा विसारथि जग्रामुद्गरं घोरमम्बिका न द्रोततः चिच्छेदा पतस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमधम वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदय दैत्यपुङ्गवः दैव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरताड्यत तलप्रहारा भीतां निपातमहितले स दैत्यराजः सहसा पुनरेतथोत्थितः उत्पत्त च प्रग्रहो च देवीं गगनमासिते तत्रापि स निराधार युद्धे तेन चण्डिका नियुद्धंखे तदा दैत्यचण्डिका च परस्परं चकतो विस्मृतमय सिद्धिविस्मय कार्यक्रम ततो नियुद्धं चुचिरं कृत्वा तेनं विकासः उत्पाद भ्रामयामा चिच्छेव धरणितले सचित्तो धरणे प्राप्य मुष्टिमुधम वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधेच्छया तमायान्तं तो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा सूर्येण वक्षसि सकतासुपपातोभ्य देवी शूलाग्रवीक्षित चालयन् सकलां पृथ्वीं साधुदीपां स पर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाप निर्बलं चा वन्नभव उत्पातमेघा शोल्का ये प्रागा संस्थे सममयो सहितो मार्गवहिनस्तथा संस्ततपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भर मानसः बभूनिते निस्तस्मिन् गन्धर्वाले तमजगो अवादयस्तथैवान्ये नन्नता चाप सरोगुणा बभू पुण्यस्तथावातः सुप्रभव दिवाकर ज्वज्ज्वलो चाग्नेयः शान्ता शान्ता दिग्जनिस्तनुना ओम श्री भक्ति दुर्गादिव्यै नमः। एकादशोऽध्याय। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रयुक्तां स्मरणमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावहिनी पुरोगमास्तां कत्यानि तुष्टवरिष्ठलाभाद् विकासी वक्त्राब्जे विकासितासाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृतस्नमङ्गलवीर्यै त्वं वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरी तम भजे तत् कातेषु तेस्तव प्राप्रोक्ति सर्वभूताय दा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुताय सुते कावा भुवन्त परमुक्तये सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गावर्गदे देवी नारायणी नमस्ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्ते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमस्ते षष्ठी स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्ते हंसिक्त विमानास्ते ब्रह्माणी रूप धारिणी कोशाम्भ चरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्रादि हरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूर कुकुटवते महाशक्ति धरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते संचक्र दासारंग हित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गहितो ग्रह महाचक्रे दष्टोदुत सुंदरे वाराह रूपणे शिवे नारायणी नमस्ते नरसिंह रूपेणोग्रेण हंतुंग दैत्यांगतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्ते किरीटिनी महाव्रजे सहस्र नोज्जुरे व्रत प्राण हरे चंद्री नारायणी नमस्ते शिवदूती स्वरूपेण हृतदत्त महावले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते दष्टाकाल वदने श्रीमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदैवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्ते मेधे सरस्वतीवरे भूति बाभ्रामि तामसे नीते त्वं प्रसिद्धे से नारायणी नमस्ते
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्ताय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तत्तेव धर्म सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकाल मृत्युग्रम शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वेनापूरया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनहसुतानिव असुरा संग पंकचैतस्ते क्रोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवन्तु चंडिके त्वान् तावयम् रोगान शेषान पहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भिष्टान् त्वमासितानां न विपन्दराणां त्वमासितां हासितां प्रान्ते तत्कथं यत्कथं त्वयाद्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपैरनेके बुधातु मूर्ति कत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु वेददीपेष्वादेषु वाक्येषु चकातु धन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते यते तदेव चिद्विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रार्योदस्योर्बलान् यत्र वानरो यत्र तथावधि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपास विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपास विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वेशबन्धा भवति भवन्ति विश्वासरा ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपाले नो अरिभीते नित्यं यथा सूर्यवधा दधुनैव सद्ध पापानि सर्वजगतां प्रसमनयासु उत्पात पाकजनिशान् समोपसर्गान् प्रणतनां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणे त्रैलोक्य वासी नामिङ्गे लोकानां वरदाभ देवीवाच वरदाहं सुरगणावरं जन्मनस्यक्षत त्वं वृक्ष प्रक्षामि जगतामुपकारकं देवावचो सर्वबाधापसन्नं लोकस्य क्लेश्वरी एव मे त्वयाकारमस्मै द्वैरि विनाशनं देवीवाच वैवसुन्तरे प्राप्ते अष्टमे युगे शुम्भोऽनुशुम्भश्चैवान्यवोष्यस्येते महासुरो नन्दगोप कहे जाता है सौदागर संभव ततस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचिन्तास्तु दानवान् भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् विप्रचिन्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मा देवताः स्वर्गे मत्तलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहारे सन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च सत्यवार्षिक्यवना वृष्टयामनम्भसि मनुभिः संसुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षेष्यामि जन्मनीन् कीर्तिस्यन्ति मनुजा सदा क्षिमितिं तादतः तोऽमखिलं लोकात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुराः साकैरावृष्टैः प्राणधारकैः साकम्भरेति विख्यातिं तदास्याम्यहं भुवि तत्रैव सर्वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चामि यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनिः सर्वे स्तोस्यात् मूर्त्या भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मा लोकसदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्ता भविष्यति तदा तदा वर्तेयां करिष्याम्यारिसंशयम् ओम दुर्गादिव्यै नमः। द्वादशोऽध्याय ओम विदुषमप्रभां मृगपते स्कन्धिस्तां भीषणां कन्याभिः करवालखेटाविलसद्वस्ताभिरा सेवितां हस्तय च गदा शिखेरविशिखाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां लात्मिकां सचितां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे देव्यवाच एभिस्तवै समानित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटं नाशं च महिषासुरघातं कीर्तिष्यन्ति एतद्वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेत् सह शोष्यन्ति चैव भक्त्या मम महात्मोत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं सततो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रान् लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेत महातव्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सुत्तैनं हि तत् उपसर्गान् शेषास्तु महामाय समुद्भवन् तथा त्रिविधोत्पातं महात्म्यं सम्येन मम यत्र तत्पठिते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे सतां बलिप्रदाने पूजायामाग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरित्रमुच्चार्य श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथागतां प्रतीक्षाम्यहं प्रीत्य बलिहोमं तथागतं शरत्काले महापूजा कृते च वार्षिके तस्यां ममेत महातव्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममे तन्महात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रम युद्धेषु जायते निर्भय पुमान् रिपो संक्षम यान्ति कल्याण चोपदते निन्दते च कुलकुलं पुषां महात्म्यं शृण्वतां शान्तिकर्म सर्वत्र तथा तु स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं चरन्दभिदृष्टुं सुस्वप्नं जायते बालकाः भूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे चन्द्रां मैत्रीकरणमुत्तमं
दुर्तानां शेषानां बलहानिकरं परमक्षोभूत पिशाचानां पट्टनादेवनाशनं सर्वममेत महातव्यं मम सान्निध्यकारकं पशुपुष्पार्घ धूपैश्च गन्धदीपैश्च थोत्तमैः विप्राणां भोजन होमैः प्रोक्षणीयर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैवैश्वर्येणया स्फीतिर्मे कृते शास्मिन् सकस्सु चरितसुते सुतं हरति पापानि धारोग्यं प्रक्षते रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मना कीर्तिनं मम युद्धेषु चैतं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् कृते वैरिकतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः सत्यो यास्याश्च ब्रह्मर्षविगताः ब्रह्मणा च गतस्तासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारतः तस्योभिवायुतः ततः शून्यो गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धकुतोऽपि वा आघूर्णितो वा वाते निश्चितिः पोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भसदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन्मयत् चरितं नरोन्मुच्येत संघात् मम प्रभाव सिंहद्धादस्यो वरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरच्चरितं मम शिर्वाचित्युक्ता सा भुगते चन्द्रिका चन्द्रविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्धीयत देवां ते अपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकाः यथा पुरा यज्ञभागवतः सर्वे चक्रविनिहतार्यः दैत्याश्च देव्याः निहते शुम्भे देवरिपयुधि जगद्विध्वंसि तस्मिन् मोहगते विक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमायुः एवं भक्ति देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कृते भूप जगतः परिपालनं तयत् सम्मोहिते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टां वृद्धिं प्रक्षते व्याप्तं तयत् सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव षष्ठी भौत्यजा स्थितिं करोतु भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नरां सैव लक्ष्मी बुद्धि पदाग्रहे सेवा भाव्यतः लक्ष्मीर्विनाशव्युपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभम् ओं चतुर्गादिभ्यै नमः त्रयोदशाध्याय ध्यानम् ओं बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ओं ऋषिर्वाच एतत् ते कथितं भूप देवी महात्मोत्तमम् एवं प्रभावात् सा देवी एदं धारते जगद्विद्या तथैव कृते भगवद्विष्णुमाया तथा तुमेश वैश्य तथैवान्यविवेकिन मोह्यन्ते मोहिताश्च मोहमे सन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं राजता च सैनरं भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेयवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सहस्रसूर्थः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमर्षिं संस्थितव्रतं निवर्णो अतिममत्वेन राज्यपहरणेन च जगाम सद्धस्तप्से स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलीन संस्थिति स च वैश्यस्तपस्तेपे सेवि सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुण्ये देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणाचक्रतुष्टास्याः पुष्पधूपाग्रतर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददस्तुस्तो वरीं चैव निजगात्रा स्रगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्रे प्रत्यक्षं प्राचण्डिका देवीवाच यत् प्रार्थते त्वया भूपस्त्वया च कुलनन्दन मतस्ता प्राप्तं सर्वे परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयवाच ततो ब्रवीर्नृपो राज्यमभिभ्यजन्मने अत्रैव सनिजं राज्यं हतशत्रुमुल्बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं ब्रवीर्निवर्णमानस ममेत्यमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देव्यवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वराज्यं प्राप्ते भवान् हत्वा रिपुणस्कृतं तौ तत्र भविष्यति ततश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवादिवसुतः सामणिको नाम मनुर्भुवन् भुवि भविष्यति वैश्वर्यत्वया यश्च वरस्वतो विवाञ्छितः तं प्रक्षां संसिद्धे तौ ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभुवान् तयिता सद्धो भक्त्या ताभ्यां भिषुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सूर्तचत्यर्षभः सूर्याजन्म समासात् सावणि भवितामनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा सूर्तचत्यर्षभः सूर्याजन्म समासात् सावणि भवितामनु क्लीं ओं ओं भगवते दुर्गादिव्यै नमः शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजाप शुभं भवेत् न कवचं नारगलाय सोतं कीर्कं न रहस्यकं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुहितरं देवी देवानापि दुर्लभं गोपनीयं प्रत्नेन स्वयनुरि पार्वती मारणमोहनं वत्सं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटभारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते संभन्ते च निशुम्भासुरघातिनी जागतं हि महादेवी च भं सिद्धिं कुरुस्व मे ऐंकारी श्रेष्ठ रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुंडा चंद्रघाति चयकारी वरदानि विच्चय चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धींग धूं धूजटे पत्नी वां पिंग वागधीश्वरी क्रांग क्रीं कुं कालिका देवी सांग सिंह सुमे सुं कुरु हुंकारूपिण्ये झम 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 नादनी भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग ऐंग विंग हंग छंग धी जागृं त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खे चरितथा सांग सिंह सुं सरस्वती देव्य मंत्र सिद्धिं कुरु सुमे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे भक्तेन दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनां सरस्वती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधं त ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्चै ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्चै ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविच्चै ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः।